Hello and welcome to a very special program. There's perhaps no force in the country that works with more hardships than the CRPF, whether it's dealing with terror in Kashmir, where I am now, or in Naxal-dominated areas, or insurgency in the northeast. But spare a thought for the emotional well-being of the men and women in uniform. They operate within a realm of patriarchy which pervades not just the CRPF but all forces in the country. Gender sensitization is really important. Talking and communicating is crucial. Emotional stress is something that needs to be addressed as well. These are all just a couple of themes which are part of an effort at sensitization which is much more than just lip service. It's called Love You Zindagi. When it finally works out in its entire scope, it could end up being the largest such program in the world. We are here with the CRPF in Kashmir to talk to you about this program and explain how it is crucial for the effectiveness of our jawans in the CRPF. The goal is to get jawans to communicate. And it's not lip service, not at all. There are few services in India more exposed to hardships. A CRPF jawan, for example, moves from Naxal-hit Chhattisgarh to anti-terrorism operations in Srinagar and then seamlessly to counter-insurgency in the northeast. Stress is a potential killer. But to manage stress, you need to know why and how it hits jawans. And there is no simple answer. Depression, post-traumatic stress disorder, and operating in a male-dominated system where the burden of patriarchy often means that relationships with spouses and children are fraught with tension all add up. Charu Sinha is the Inspector General of the CRPF in Srinagar, one of the most sensitive assignments for the force in India. Alongside fighting terrorists, she is at the center of a new program that recognizes that the effectiveness of jawans in the fight against terror is directly linked to their mental well-being. It's called Love You Zindagi, a program the CRPF is working on with Coimbator's Amrita University. It all began when she was posted in Telangana. बात करते हो उसमें आप लोग? आपस में बात करते रहते। क्या बात करते हो? तो अपना घर में कितना है कि घर में क्या प्रॉब्लम है, वैसे करके बात करते रहते हैं। लड़के सब बात करते हैं घर के बारे में? हाँ, बात करते रहते। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बात होती है? हाँ, जो घर में प्रॉब्लम होता तो बता देता है। बता देता है? हाँ। पहले बताता था? पहले नहीं बताता था, अभी बताने लगा। We realize that for a man to be able to be more sensitive to a woman, he first needs to understand the dynamics of his relationship with his spouse better and take a look at how gender has impacted him and his relationships at home first. आपको क्या दिखाई दे रहा है इस ग्रुप को? बढ़िया। आप डिस्क्राइब कीजिए कि किस तरह से दिखा ये तो इसमें क्या है, यंग दिखाई दी है और मैं बूढ़ी भी है, तो हमको तो ये यहाँ से देखने से ये है कि हमें तो यंग दिखी है। Group number 2. Here in Srinagar, work to ensure that Love You Zindagi is more than a routine sensitization plan is well underway. The scope is, frankly, gigantic. कि हमने दूसरों के नजरिए से, यानी आपने इनकी आंखों से चीजों को समझने की कोशिश की। यंग लेडी नजर आई, तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगला आपके पास आता है तो आप उसकी बात सुनिए। Young jawans need to be trained to process their emotions. They are just 17 to 18 when they enter service. They end up working for nearly 38 years, of which as many as 25 are spent away from home. Personal relationships are often badly hit. A phone call from home often means stress, and that stress has to do frequently with the inability to respect the role of the wife and her rights in being an equal decision maker, albeit
in an entirely different setting. Jawans are told in clear terms that the digital literacy of their spouses, net banking, the right to drive, financial management are as much a responsibility of their wives as it is theirs. We started a program called Chopal, which we wanted to initiate a culture of sharing, where the man only talks about what has happened in his home front, in his personal life in the last 1 week. So we do this once a week. The first 3 months, men usually take that much time to open up, but once 1 or 2 people start sharing, then that sets the pace, and then everybody chips in. When one speaks about a culture of masculinity in the CRPF, it often comes down to men serving on frontline units or in very difficult areas, for example in anti-Naxal operations, being unable to express their tensions. Stress is a huge problem in the force. What really needs to be done to deal with that? And the answer is simple: communicate. But in order to get a Jawan to communicate and to express the stresses that they feel is a huge effort. And part of this program is to trying to convince them that they need to talk. It's not easy. चिट मिलेगी, उसके अंदर क्या लिखा है आपको उसको ध्यान से पढ़ना है. सभी ने अपना रोल पढ़ लिया ध्यान से? खड़े होके अपनी अपनी जगह ले लेना. महिलाएं वाली क्लास के आगे, पुरुष वाले महिला जो पुरुष के काम है वो पीछे. अभी आप सभी एक एक करके अपना अपना रोल बताएंगे कि आपके हाथ में कौन सी पर्ची है. बताइए. गर्भवती होना. गर्भवती होना ये महिला का एक रोल है सोसाइटी में. आप देखते हैं या महिला करती है? ठीक है. चुगली करना. चुगली करना. आमतौर पर चुगली कौन करता है? महिलाएं करती हैं. बर्तन धोना. बच्चों का पालन पोषण कौन करता है आमतौर पर सोसाइटी में? महिला. जमीन खरीदना. फाइनेंशियल डिसीजन लेना. अंतिम संस्कार करना. अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि अगर आपको जो यहाँ खड़े और जो यहाँ खड़े, आप में जिन को लगता है कि टेक्निकली ये काम महिलाएं भी कर सकती है, पुरुषों की जगह जो खड़े उनको लगता है कि ये काम महिला भी कर सकती है, पायलट महिला भी हो सकती है, चला सकती है, बिल्कुल सही बात है. बैंकिंग का काम करना, बैंक का काम करना, बैंकिंग का काम करना, ये तो महिला भी कर सकती है ना? कर सकते होंगे आप लोग. बॉडी बिल्डिंग, महिलाएं भी बॉडी बिल्डिंग कर सकती हैं. The end of the burden of patriarchy has to be dealt with now. Jawans need to be explained that conversations surrounding gender are not a threat to their notion of masculinity. It's often not easy to get Jawans to talk. Through this course we want that Vinita is an assistant commandant in the CRPF and a master trainer, along with Javed Ali and Monica DS. taking care of that. When they aren't wielding an AK-47 to defend against terrorist attacks, they are working overtime to expose as many Jawans as possible to the need to talk, to express, to deal with their mental well-being. These are not lectures, they are conversations, sometimes role plays or choppers, where Jawans are told to talk to their colleagues, let out steam, you are not being judged. पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद चल रहे थे, तो मैंने भी अपनी बच्ची का एडमिशन कराया और घर पे मैं मकान बना रहा हूँ तो उसमें काम चल रहा है. तो यही बस इसमें ही छुट्टी निकल गया इनकी. तेरा कैसा रहा? मेरा तो ठीक ठाक रहा. अभी बच्चा अभी स्कूल में डालने लायक तो हो ही गया है, लेकिन कोरोना की वजह से हमारे इधर स्कूल ये बंद है. अब तो ऑनलाइन क्लासेस चालू करो तो अब कहाँ बच्चे क्लास स्कूल जाएंगे? तो जो भी ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसको भी अटेंड नहीं करते, बस अपने मोबाइल में, और इससे घर वाले भी परेशान हैं. Through this course we want that people to understand that everything could be done by a mahila as well. Even your wife could do everything, Right. and you don't have to take the burden, all the burden on your shoulders. Right. As well as we are trying to show that we mahila officer, being a lady officer here, being the mahila jawans here, we are doing all the duties done by the male counterparts here. If the burden of patriarchy is taken away from men, Right. and women are empowered, we could Right. bring a balance in the society. There are differences between men and women, and we need to accept them. Well, fine, but there are stress situations. At times there will be stress situations. The response will be different. Female, they have a reach out approach, and most of the times they will talk with the people, they will discuss their problems. Men don't. There are differences. Let's accept them, and let's not think that why my wife is not behaving as I want him, and why she, and even vice versa. This is what is happening now. Right now I have acceptance. If she is behaving like her, like what actually is there,
So I should not force her. That acceptance has come and it is helping now. When a person is able to understand his own self, then only he can deal with others in a better way. So the entire mental health training helps him to fight stress, depression, anxiety, and also there are a lot of traumas which our jawans go through. This is conflict zone where we are working right now in Kashmir. So it happens due to grenade throw, standoff fire, encounter. We lose our men, but that does not hamper their mental health. So we are actually taking care of their emotional and mental health through this training. तब आपके दिमाग में क्या विचार आएंगे? There is reason why this is happening. In a Rajya Sabha statement, the government has said 680 personnel belonging to paramilitary forces have died by suicide in the last 6 years. Domestic problems, illness and financial problems are a major contributory set of factors. We find that men who have been really stretched out because of issues on the home front, we find that when they are here and they are working for 12 to 14 hours or 16 hours a day and standing in a morcha or in the bitter cold in winter, we find that one phone call at home disturbs him tremendously and he often loses his balance at times, and we find them breaking down at times and crying away, and then that's the time when we really need to take care of them. So the idea is that if I can help him to take care of his own thoughts, emotions, feelings and reactions to situations, then he does not reach that point. So it's like a preventive measure as well as a wholesome measure. The program on sensitization is absolutely huge. If it works out in the manner in which it's expected, it could end up being the largest such program in the world. But at the moment, in the Srinagar area, the goal is to ensure that training in sensitivity at so many levels is imparted to up to 25,000 jawans of the CRPF. There are more than 50 master trainers and there are more than 500 other trainers who ensure that every jawan in every unit gets a little bit of this education in sensitivity. In key Love You Zindagi sessions, gender sensitivity often means breaking down the most basic notions of gender. Here, a burly Sardar plays the role of a woman. परसेंटेज बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने बीटेक के लिए कितना नंबर है बेटा? 95%. वेरी गुड. अभी मैं बीटेक करना चाहती हूँ मम्मी. तो बीटेक के लिए तो तेरे पापा से पूछना पड़ेगा बेटा. भाई सुनते हो? हाँ ठीक है. ये अपना बेटी अपनी 95% नंबर है, वो दिल्ली में जाना चाहती है बीटेक करने के लिए. रुको मैं कॉल करता हूँ. हाँ एक मिनट. क्या हुआ? ये 90 बढ़िया नंबर लेके पास हुई है बेटी अपनी, दिल्ली जाना चाहती है, आगे पढ़ने के लिए बीटेक करना चाहती है. मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा देखें, ध्यान दें. कहाँ पढ़ना चाहती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में. पापा क्यों, ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा क्या? हाँ कॉलेज अच्छे नहीं, मैंने सब पता कर लिया है, कई अच्छे नहीं, अच्छे क्लास के लिए, अच्छे बढ़िया पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है मुझे. मैंने आपको बताया था इसके लिए रिश्ता रखा है एक अच्छा. अभी इसकी तो उम्र ही 17 साल है, तो 18 साल भी नहीं है. तो नहीं बिल्कुल नहीं. अगर तुमको पढ़ना है पास के कॉलेज में पढ़ो, दिल्ली में बिल्कुल नहीं पढ़ने जाओगे. और एक अच्छा रिश्ता रखा है, तुम शादी करके अभी वहाँ सेटल होंगे, ठीक है? कोई जरूरी नहीं वहाँ पे पढ़ने जाने की दिल्ली में. मेरे परसेंटेज अच्छे है पापा. जब बोल दिया नहीं तो सुनाई नहीं दे रहा आपको नहीं पढ़ने जाना. इसका देखिए, आप चुप रहिए, आप ही के वजह से इतना पढ़ने गई है. देखो ना, मेरे 65% मार्क्स आए हैं. आपने मुझे बोला था आप मुझे बाइक दिलाएंगे और बाहर एडमिशन भी कराएंगे. वाह शाबाश बेटा, ये आगे चल के मेरा नाम रोशन करेगा. तुम क्या करेगी? तो 65 नंबर है, इसके 95 है. क्यों ना हम बेटी को भेज दे बाहर पढ़ने के लिए. वो जाएगी दूसरे का घर बसाएगी, ठीक है? मेरा बेटा आगे चल के मेरा नाम रोशन करेगा. ये बाहर पढ़ाएगा, ठीक है? बाहर जाके क्या करेगी? इसकी शादी की उम्र हो गई है. देखिए अभी तो मतलब लड़का लड़की में कोई भेद नहीं रहा. थोड़ा इसके बारे में सोचिए. इसका जब बोल दिया नहीं आपको समझ नहीं आ रहा है. जाएगी तो नहीं जाएगी, क्या है ये? नहीं जाएगी. अगर ये जाएगी तो मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा. मुझे नहीं बेटा तुम पढ़ो. अरे तुम पढ़ने होगा, तुम्हें मेरा क्या हल्ला क्यों हो रहा है? अरे देखो भाई साहब, जिद किए जा रही बिना मतलब की. वो पढ़ने जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी. बाहर जाएगी पढ़ने. अरे बताइए ना, देखो पड़ोसी की लड़की गई थी, वो इधर उधर घूमती रहती है और भाग भी गई. शादी आदि कर लेते हैं, ऐसे नहीं. तुमने घर का नाम बर्बाद करेगी ये, ठीक है? सभी एक जैसी नहीं होती. जब बोल दिया समझ नहीं आ रहा है. ऐसे इनको पढ़ने बाहर नहीं जाने देना है.
ये मर्दों का समाज है बेटा, इसमें हमारी औरतों नहीं जाएगी, पर तुम ज्यादा चढ़ाओ मत, वरना बंद कर दूंगा एक कमरे में, ठीक है? नहीं बोला तो नहीं, ना का मतलब समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं पढ़ने जाओगी, इसी कॉलेज में पढ़ो या फिर शादी करके जाओ। चलो बेटा, तुमको नई बाइक दिलाता हूँ मैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी आपने खुद देखा और आप खुद आए सेंटर में, खुद आए ना, कि हर काम महिला भी कर सकती है और हर काम पुरुष भी कर सकता है। घर का काम पुरुष भी कर सकता है, बच्चों का लालन पोषण पुरुष भी कर सकता है। For jawans who've been exposed to some of the training, the impact is all too clear. कुछ दिन पहले जैसे कि मेरे भाई की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे जैसे पहले हम लोग एक कंबाइंड फैमिली था, भाई घर में था, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें खुद ही एडजस्ट कर लेता, मम्मी पापा को देखना, घर की जवाबदारी। तो यहाँ पे जो मैं था तो अपनी फोर्स में फ्री माइंड करके अपनी ड्यूटी कर रहा था। बट वो लॉस होने के बाद में ना मुझे सारी चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया कि मुझे घर परिवार को भी देखना है, मम्मी पापा को देखना है, एंड मुझे ड्यूटी भी परफेक्टली मुझे अपना 100% मुझे ड्यूटी में भी देना है। तो इस सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल मेरे पर आया था। तो मैं मतलब अकेलापन महसूस करने लगा, दबाव में रहने लगा, एक खिंचाव सा लग रहा था। जब ये कोर्स मैंने किया सर, तो इस कोर्स से ना मुझे सर बहुत सारी चीज़ों को मतलब अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखा सर मैं, सबसे अहम चीज़ सर उसमें। तो इसी के बाद क्या हुआ सर, मैं धीरे धीरे सबके साथ में मतलब सोशलाइज होना शुरू हो गया हूँ। मेरे हस्बैंड की बातों को मैं भी नहीं समझ पाती थी, फोर्स में होने के नाते वो भी मेरी बातों को नहीं समझ पाते थे। तो बोलते थे पता नहीं कहाँ रहते हो, घर वालों से दूर रहते हो, बच्चों से भी परिवार से दूर रहते हो, फ़ोन भी अटेंड नहीं करते हो, टाइम से बातचीत नहीं हो पाती है। फिर इस कोर्स इस तरह हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बदलाव आया कि अभी वो इस कोर्स मैंने ये कोर्स करने के बाद मैं भी उनकी बातों को अच्छे से समझ पाती हूँ। पहले ना कोई आदमी कुछ बोल जाता था, कोई हंसी मजाक में बोल गया, जहाँ कोई ऐसे जाते हुए छेड़ गया तो मन परेशान होता था। कोर्स के बाद ये फर्क पड़ा सर भी, यानी मेरे मन का जो रिमोट कंट्रोल है ना मेरे हाथ में आ गया। किसी से बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे उसको पॉजिटिव में लेती हूँ, निगेटिव में नहीं लेती हूँ। पहले मैं कोई मुझे मजाक करता तो मैं गुस्से में आ जाती थी। मेरी छोटी सिस्टर भी 10+2 कर रखी है, तो अभी पापा पहले उनको जाने के लिए मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि बाहर नहीं जाने देना, लेकिन मैं जब कोर्स किया इसके बारे में बताया तो फिर पापा बोले ठीक है, मैंने जो अब पहले किया है वो अब नहीं करेंगे। इस कोर्स के दौरान इसने हमारे अंतर्मन को जागरूक किया है सर। कोई भी सिचुएशन को हम गलत बिहेवियर में जाने से रोक लेते हैं, क्योंकि उसी तरह हम जैसे सिचुएशन आती है उसी तरह उस सिचुएशन को कम आंकते हैं। Ultimately, the goal is to have a system where CRPF jawans are more sensitive, where there's a natural acceptance of the equality of the sexes, where there is recognition that opening up to conversations doesn't take away from masculinity, and where the relationship between a jawan and his family is positive and enabling. A jawan with greater emotional equanimity is crucial for our security. Vishnu Shom for NDTV.